लोग उसको पकड़कर फेंकने लग गए थे नहर में कि इसको फेंक दो नहर में। तो किसी ने जाकर वहाँ बता दिया उन लोगों के अभी भागो, एक अंग्रेज को मार दिया है। जैसे फादर को मारा ना, तो जैसे नीचे लोग बैठते वो बैठे रहे, बाकी जो गाड़ी में थे ना वो सारी गाड़ी भर भर के ले गया। और मेरी बीवी और बच्चे वहाँ से मौका मिल गया इस कॉलोनी में घुसने का, फिर निकल गए बाहर। यहाँ गना था, ये इस गने में आकर छुप गए। डिगड़ी रोड बंद हुआ था, बदीन रोड बंद हुआ था, ये हैदराबाद रोड बंद हुआ था, और ये सारे रोड जो ये सारे बंद थे। जो गाड़ी आती थी वो बाहर चली जाती थी, हम शहर में अंदर नहीं आने देते थे। ऐसे हमने ये हड़तालें की। जलसा किया, फिर आसमा जाएंगे ना कुछ कोशिश की, फिर तो ये लोग तो वापस आ गए थे। The united struggle of the Haris at Matli allowed them to triumph over a politically connected and notoriously violent landlord who sought to destroy their collective will. Such unity is uncommon in the Hari community, keeping them vulnerable to internal strife. Muslim Haris refuse to cohabit with Hindus, and even the Hindus uphold their rigid caste laws. मैं ऐसे कौन खाएगा, ऐसे भील जगह तो कौन खा, न मारनो न को पानो न को शादी न को भी कुछ नहीं। Among Hindus, we find that the tribes and scheduled castes are looked down upon by the Hindu upper class people themselves. So, and it's not only a question of social status, but also of caste and religious discrimination. Ran away from a life of debt bondage in Kipro, landlord Abdul Rahman Murray decided that if he could not restrain Manu's body, then he would break the defiant Hari's spirit. अल्लाह को पता है होगा पर हिम्मत में मेरी में कानून में जो पहले से बात चल रही है, ऐसे में कानून में जो अब हिम्मत है वो मैं हारूंगा नहीं। ये हुकूमत का ये सारा किसी को कत्ल कर लेंगे या किसी को माँ किसी को बाप को आखिर के लेके जाएंगे। माल का पहले माल की चोरी होती थी, अभी इधर पाकिस्तान में आदमी को चोरी हो रही है। What Murray underestimated was the power of desperation. A man with nothing left to lose is a man with everything to gain. एक मर जाता है उसकी इंसान जिंदा होता है, पर ये एक एक्सीडेंट में फोत हो जाता है वो तकलीफ नहीं होती थी, किसी बम में उड़ जाते हैं वो तकलीफ नहीं होती थी। ये कैसे जबरदस्ती किसी को उठा के लेके कि यार देश की नगरी है, कानून नहीं है पाकिस्तान का, नहीं है कानून इधर। किसी को बकरी बड़े लेके बकरी चोरी हो जाती है, उसके 10 आदमी वो पकड़ के ले जाते, एक बकरी में 10 उसके भर के देते। हमारे आदमी 9 अगवा हुए आज तक, किसी ने ऊपर से चौधरी साहब की मेहरबानी थी, इफ्तार चौधरी की, आए जी 2 पहले वाला इस तरह जहांगीर था, वो इधर आया 2 दफा आज उधर वो डंडा देता आ जाते इधर, बस कल नहीं परसों वो मेरे पास रकाट है, बिल्कुल रकाट है। All the important judgments on the bonded labor are practically suo motu cases. A gentleman from Scandinavia wrote a letter to the Chief Justice of Supreme Court, and the Supreme Court took notice of it. Very good, very good. The opinion of a Scandinavian citizen is more important than the clamor of thousands of human rights activists in Pakistan. In 2006, the Chief Justice had appointed District Inspector General Salimullah Khan to lead the investigation and search for the kidnapped family. उनके लिए जब डीआईजी सलीमुल्लाह साहब ने एक्शन लिया तो उनके ऊपर झूठा मुकदमा किया गया, एफआईआर की बुक छीनने का और इस तरह के और बहुत सारे इल्जाम देके उनके जूनियर्स ने उन पे मुकदमा किया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जलील किया गया। As the primary law enforcement agency, the local police offer little or no sanctuary to workers fleeing from bondage. At best, they will ignore a landlord's request for help to locate such workers. At worst, they will fail to discharge their duties and help out landlords by returning runaway Haris. सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पॉलिटिकल ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर ज़्यादा जहाँ से निस्बत वहाँ है, किसी वडेर ने रखा है किसी एसएचओ को, अभी उसके पास ही हारी बैठे हुए हैं,
अब उसके के खिलाफ वारंट आ जाते हैं कोर्ट के, लाजमी हो तो मैं बात उसको पहले बताएगा ना। The blame may not only land on individual officers, but on a fallible law enforcement system. सिस्टम हर तरफ खराब है ना। जो वारंट सर्च में लिखा होता है कि फिलां जगह फिलां हारी जमींदार के घर के फिलां उत्तर में यहाँ पर बंदे बैठे हैं, हम जाएं वारंट 2 मशीर लेके जाते हैं और इनका बंदा भी साथ में होता है, उनके संबंध के बंदे भी जाते हैं। जब हम जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। अभी अनऑफिशियली तो हमें पता भी चलती, जहाँ नहीं तो आधे किलोमीटर आगे वहाँ बैठे हुए हैं। फिर कोर्ट तो हमें ये नहीं कहते कि आप उस तरह क्यों गए, आप वारंट जाए उस जगह पर आप रहो, उसके लिए फिर दोबारा हमें रुजू करना पड़ता है। जहाँ वो हारी गए वो दोबारा एप्लीकेशन देगा जज साहब को कि वहाँ नहीं वहाँ आए, फिर उसका अलग वारंट निकलेगा। जब उस जगह का वारंट निकलेगा वो वहीं से निकल चुके होंगे। In spite of the forces working against them, an estimated 8,530 bonded families have escaped to date. Sneaking out under the cover of darkness, past armed guards and ruthless watchdogs, men, women and children risk capture, torture and even death, equally endangering those left behind. आम्बो नाम है छोकरे का, वो जमींदार के पास है, गुल्लू खैर मोहम्मद राजर, कुन्नू राजर, गुलाम रसूल राजर उसके पास है। जो मेरा बच्चा लेके दो, मेहरबानी करो, हुकूमत है सो लेके दे तो बड़ी मेहरबानी, हाथ बांधता हूँ। Sadly, Karamishi's story, like Manu Bheel's, is not unusual in the struggle against bonded labor in Pakistan. The system is rooted in feudal traditions and religious prejudice against Hindu and Christian minorities, and reinforced by a rigid class hierarchy similar to the caste system in India. Despite extensive laws, the practice continues due to pervasive corruption, a weak and ineffective judicial system, and a general apathy towards the issue in Pakistani society. The judicial system offers no amnesty to desperate labourers seeking acquittal. I think it was the section 25 of the Sin Tenancy Act, which allowed a landowner to hold back a hari tenant unless he pay you whatever he owes to you. Another blatant detail overlooked by the judges of the Sindh High Court is the fact that the Bonded Labour Abolition Act overrides the Sindh Tenancy Act. This act came in 1992. It could not be enforced because rules were not made. Rules were made in 1995. Under the Act, offenders are threatened with 5 years in prison and a fine of $840. $840 is the cost of freedom in Pakistan, the cost of a childhood destroyed, the cost of women raped and men starved, beaten and chained up like animals. In 2000, the Sindh High Court Circuit Bench fined a landless Hari, Rano Bheel, 15,000 rupees for filing a false habeas corpus application pertaining to the alleged wrongful detention of 67 Haris. 15,000 rupees was more than Rano Bheel earned in an entire year. Justice Ashraf Laghari declared that forcefully locking up 67 people was neither unlawful nor illegal. In September, 2 more Haris were fined rupees 4,000 for filing a false application against a landlord. The judicial system had once more failed to implement existing legislation, and the federal government refused to strong-arm the issue. जो टेनेंसी एक्ट है वो भी एक तरह से डिफेंड करता है लैंडलॉर्ड को। अब का जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट बना है वो जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसके तहत वो रेटिफाई किया है पाकिस्तान ने, लेकिन उसकी जो है उसको मतलब अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा है, इसलिए कि वही बात है कि एस्टेब्लिशमेंट में वो लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, और गरीबों की बात नहीं सुनी जाती। Manu refuses to remarry. बच्चे लेके आऊंगा, वही मेरी जिसकी शादी है उसके 4 बच्चे हैं, मेरे वही घर वाले, दूसरी में शादी कैसे करूँ, मैं ऐसे करूँगा ऐसे, हाँ वो उधर जो कैसे उसने मार दी है ये पता नहीं।
He has kept a copy of the newspaper advertising reward money for the return of his family. The clipping is fading.